Hello everyone, welcome to Money Matters Talks. My name is Amol Paranspet and let me first thank you for your positive feedback and suggestions. आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल गोल सेटिंग के बारे में। जब भी हम गोल्स के बारे में बात करते हैं तो हमेशा वही ट्रेन, टिकट और डेस्टिनेशन का घिसा पिटा एग्जाम्पल दिया जाता है। वी कंपेयर इट विथ आवर लाइफ एंड गोल्स, मगर मैं आपको वो सब नहीं बताऊंगा। अगर सीधे शब्दों में गोल्स डिफाइन करें तो गोल्स आर नथिंग बट योर विशेस, योर ड्रीम्स, योर टारगेट्स विच आर फ्यूचर ओरिएंटेड एंड यू इंटेंड टू अचीव। हमारे लाइफ गोल्स को भी कैटेगराइज करें देन वी कैन टॉक अबाउट एजुकेशनल, हेल्थ, रिलेशनशिप गोल्स, मगर आज हम फोकस करेंगे फिनेंशियल गोल्स पर एंड हाउ टू सेट इफेक्टिव फिनेंशियल गोल्स। इन सिंपल लैंग्वेज फिनेंशियल गोल्स मतलब मनी रिलेटेड गोल्स। Yes, money related goals which we intend to achieve or fulfill in the future. Effective financial goals need to be SMART. SMART यानी specific, measurable, achievable, relevant and definitely time bound. याद रखिए, any financial goal to qualify as your financial goal needs to fit in the SMART parameters. In fact, these parameters not only apply to financial goals but all the life goals which you desire and plan to achieve. मैं आज एक अलग एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा जो प्रोमिनेंट भी है गोल्स के बारे में। गोल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्रोसेस गोल्स यानी बिहेवियर गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स यानी स्टैंडर्ड्स जो हम सेट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स आउटकम गोल्स, द एंड रिजल्ट। किसी वाइज पर्सन ने कहा है, change the things which you can, accept the things which you cannot, and have the wisdom to distinguish between them both. To understand this more clearly, the outcome goals are beyond our control. All you can control and act upon are the process and the performance goals. Well, most of us focus more on the outcome or the end result, which is the least in our control, and focus very less on the process and the performance goals, yani behavior and standards which we set and which are the most in our control. Just to give you an example in terms of financial goals, imagine कीजिए you need 25 lakhs for your child's education in the next 10 years. Now this is the end result or the outcome goal set by you. मगर the process goals and the performance goals which you will set will determine if you achieve this outcome goal. The process goal for this can be as simple as to cut down your monthly expense budget and save say about 10,000 rupees a month, and your performance goal can be to invest this 10,000 in an investment product for the next 10 years to achieve the end result. So in nutshell, just focus on your process and performance goals. You can easily achieve the outcome goals or the end result. Financial goal setting process में सबसे पहले आपको अपनी सारी financial goals को list down करना है, and then you need to categorize them on the basis of your time horizon. Short term goals, which is 1 to 3 years, medium term goals, which is 3 to 10 years, and long term goals, 10 years and above. कई बार लोगों को गोल्स को प्रायोरिटाइज करना और मॉनेटरी टर्म्स में उन्हें क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल लगता है। फिनेंशियल गोल्स प्रायोरिटाइज करने के लिए we have already spoken about one of the best tools, the financial priority pyramid, in our previous videos. Do watch it if you have missed it. In order to quantify your goals in monetary terms, you need to estimate the current cost for that financial goal and understand the inflation index, जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन आज अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहे तो what would be the current cost for it today? Say 10 lakh rupees. Now if your child's education goal is after 7 years, then you need to calculate the future value of your goal post 7 years. यानी you need to understand आज के 10 लाख की कीमत इन्फ्लेशन के कारण 7 साल बाद क्या होगी। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन के लिए आपको कई सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स मिलेंगे या आप अपने एडवाइजर की भी सलाह ले सकते हैं। Similarly, you need to calculate the future value for all your financial goals, taking into consideration the inflation index. Remember, inflation index is important
to understand your future value. Do like and share our videos. Press the bell icon and subscribe to our channel, Money Matters Talks. Thank you.